Good morning, friends. So, we're starting with Prelims Booster, and as usual, I'm going to talk about the topic first in Hindi, and then I'll move forward with this topic in English. Okay, so let's see the first topic, which is International Day for Biological Diversity. तो 20 मई जो है उस दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का जो थीम है वो है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा थीम, बिकॉज ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी में। आपको एक ऑप्शन दे के पूछ सकते हैं कि क्या इस साल का थीम क्या था। यूपीएससी को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस दिन जो है यूएन जनरल असेंबली में कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली जो है वो साइन किया गया था। असल में 29 दिसंबर को साइन किया गया था और 29 दिसंबर को पहले मनाया जाता था इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बट जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोलना शुरू किया कि उस पीरियड में 29 दिसंबर के आसपास जो है वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस और जो है क्रिसमस की सेलिब्रेशंस की वजह से छुट्टियां बहुत होती हैं, तो लेट्स शिफ्ट दिस डे। तो दिसंबर 2000 में जब फाइनल एक्ट जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का साइन किया जा रहा था, तो 22 मई 1992 जिस दिन साइन किया गया था उस दिन को सेलिब्रेट करने का जो है वो यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन कि हाँ अब से हम दिसंबर 2000 से जो है हम 22 मई को सेलिब्रेट किया करेंगे। अब देखते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है बेसिकली, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें और 1993 से ये एनफोर्स हो चुकी है। और इसमें 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना, उसका सस्टेनेबल यूज इंश्योर करना और उसके जो बेनिफिट्स उससे हमको अराइज होते हैं उसको फेयर और इक्विटेबली शेयर करना सारी कंट्रीज में और सारी लोकेलिटीज़ में। अब सारी कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट इसको रेटिफाई कर लिया, लेकिन यूएस ने इसको साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। अब इसका सेक्रेटरीट जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और ये यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर जो है वो वर्क करता है। हर साल इसकी मीटिंग होती रहती है बेसिकली रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये सब न्यूज़ में चल रहा है तो हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो इंडिया का है 2002 का, उसको अगर हम ना डिस्कस करें तो ये फेयर नहीं होगा। इसलिए लेट अस ऑल्सो सी दिस एक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 में साइन किया, जो है उसको इनेक्ट किया था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2004 में हमने नोटिफाई किए। इसके अंदर हमने थ्री टियर स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पर। ठीक है, अब जो है नेशनल लेवल का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहते हैं, उसमें चेयरपर्सन होते हैं, 5 नॉन ऑफिशियल और 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। अब इसका काम क्या होता है कि फॉरेनर्स जो चाहते हैं, जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, वो अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं या कुछ हमारी बायोलॉजिकल जो है स्पीशीज़ के साथ अगर वो कुछ जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं, उसका जो उसमें कुछ जो है वो उसमें वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एक्सेस चाहते हैं हमारी जो इंडिया के बायोलॉजिकल जो है स्पीशीज़ में, तो उनको उनकी जो भी मैटर्स हैं उनको डिस्कस कौन करेगा? नेशनल लेवल की जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब इंडियंस जो चाहते हैं एक्सेस, अगर ऐसा कुछ जो हमारे बायोलॉजिकल जो स्पीशीज़ के ऊपर एक्सेस चाहते हैं, तो उनकी जो मैटर्स को डील करने के लिए स्टेट लेवल की जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को बनाया गया। अब जो लोकल लेवल पर जो है अगर कंजर्वेशन को देखना, सस्टेनेबल यूज़ को देखना, फिर डॉक्यूमेंटेशन, जो ये सब चीज़ें रिलेटेड है, वो उसके लिए हमने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई हुई है। ठीक है, तो स्टेट लेवल पर फॉरेनर्स जो एक्सेस चाहते हैं उनके लिए हमने नेशनल लेवल बनाई हुई है। जो इंडिविजुअल्स हमारी कंट्री के अंदर हैं उनको अगर चाहिए, इंडियंस को या किसी को कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उनके मैटर्स को कौन रेगुलेट करता है? स्टेट अथॉरिटीज़। और जो लोकल लेवल पर कंजर्वेशन का ध्यान रखते हैं वो हमारी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको स्ट्रक्चर जो हमारा तीनों का। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ आई विल डिस्कस दिस इन इंग्लिश. International Day for Biological Diversity was recently celebrated on 22nd May. The theme for this year was
we are part of the solution. So please remember this theme, because UPSC wants to ask you questions regarding such themes. It has been asking such questions, so you have to remember this theme also. So let us see the background of this topic. Initially, when UN General Assembly adopted a resolution, or rather created the Convention on Biological Diversity in 1993, this day was celebrated on 29th December, because on that day we adopted this Convention of Biological Diversity in the year 1993. But later on, in December 2000, it was decided that the day should be shifted to 22nd May, because it was difficult for many countries to celebrate 29th December, given there were some holidays and of New Year and Christmas. So it was decided in December 2000 that we should celebrate 22nd May as the International Day for Biological Diversity. Now let us see what is Convention on Biological Diversity. It is basically a legally binding treaty to conserve biodiversity. It has been in force since 1993. It has three main objectives. The first objective is conservation of biological diversity. We want to conserve the biological diversity that is prevalent in all the countries. Now, the second thing is sustainable use of components of biological diversity. All commercial components, every research, anything that we do on biological species, we have to ensure that it is sustainable, and what we are using, the resources that we are using out of our biological diversity, they are sustainable. We do not deplete them, we do not target them adversely. That's why we have to ensure that the sustainable use of biological diversity is ensured. The third arm of this Convention on Biological Diversity is fair and equitable sharing of the benefits. Okay, so this research and commercial use of our genetic resources generates some benefits. Okay, so this convention wants to ensure that the benefits that are arising out of these genetic resources, they are distributed fairly and equitably amongst all members and all member countries. So these three are the main objectives of this convention. Okay, almost every country has ratified this convention except US, which has signed this treaty, this convention, but it has not yet ratified it. The Secretariat of CBD is located in Canada, Montreal, and it operates under the auspices of United Nations Environment Program. So they regularly conduct, the members, the parties, which are these countries, they regularly meet with each other, and these meetings are called Conference of Parties. Okay, so we also have to see the Biological Diversity Act of 2002, which India enacted, because we are discussing this topic. If we avoid this topic, this subtopic, it will not be fair to this entire topic. Okay, so we have to discuss this act also. So India enacted this act in 2002, and we also notified biological diversity rules in 2004, and these two combined formulated a three-tiered institutional structure at national, state, and local levels. So at the national level, National Biodiversity Authority was established, and it mainly deals with requests made by foreigners. They can be individuals, institutions, or companies. So when they request for an access to our genetic resources, all those requests are dealt by National Biodiversity Authority. Similarly, all the requests made by Indian citizens or Indian companies or institutions, they are dealt by state biodiversity boards. And the local level conservation, sustainable use, documentation, and all that, it is taken care by biodiversity management committees set up at the local level. Okay, so this is a three-tiered structure. We have to remember this. So let us move on to the next topic, which is white flies. तो white flies क्या है? White flies जो है वो invasive species है, जो हमारे जो है एग्रीकल्चर को एक तरह से टारगेट कर रही है और हमारे को एक तरह से
ख़राब कर रही है हमारे जो एग्रीकल्चर को। तो इसके बारे में भी कुछ रिसर्च हुआ है, इसके बारे में देखा जा रहा है कि ये हमारे को कैसे थ्रेट जो है वो करती है। तो ये देखा गया है कि ये जो अंडर साइड्स हैं, प्लांट के जो लीव्स होते हैं, जो हमारे जो क्रॉप के लीव्स हैं, उसको ये एक तरह से तबाह कर देते हैं, उसको उसको खा लेती है ये। और इसका पॉलीफेगस नेचर है। पॉलीफेगस नेचर मतलब इसको कोई वो नहीं है कि मैं सिर्फ मतलब ये वाइट फ्लाइज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स नहीं खाती, ये सारे ही ऑलमोस्ट जो है फूड आइटम्स को ख़राब कर देती है, खा लेती है। और ये बहुत ही तेज़ी से ब्रीड होती है, तो ये हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, वार्म और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में मिलती हैं ये, और ऑलमोस्ट 2000 प्लांट स्पीशीज़ को ये तबाह कर चुकी हैं, और 200 प्लांट वायरसेस जो है एक तरह से ये लेकर अपने साथ चलती हैं, उसके ऊपर ये वेक्टर है, मतलब फैलाती हैं ये वायरस, और उससे हमारे प्लांट की स्पीशीज़ जो है वो तबाह हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसको थ्रेट जो है वो कॉटन को होता है। कॉटन वर्स्ट हिट क्रॉप्स में है, और जो हमारी बीटी कॉटन है, जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कॉटन है स्पीशीज़ है, वो भी रेजिस्टेंट नहीं है इसको, वाइट फ्लाइज को। अब याद रखना कि रेजिस्टेंट नहीं है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि वाइट फ्लाइज से जो है जो बीटी कॉटन है वो रेजिस्टेंट है, बट वो स्टेटमेंट गलत होगी, तो आप ये याद रखना। इसको हम सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड से नहीं मार सकते हैं इस वाइट फ्लाइज को, ये भी याद रखना। ये दोनों फैक्ट्स ही सरप्राइजिंग है। इसके लिए नेचुरली अकरिंग जो हमारे इंसेक्ट प्रेडेटर्स होते हैं, इंसेक्ट प्रेडेटर्स क्या होते हैं, जैसे वाइट फ्लाइज को समझ लो कोई और जो इंसेक्ट है उसके थ्रू हम मार सकते हैं, ठीक है, जो कि इस पर प्रेडेट करे, मतलब कि वाइट फ्लाइज को खा जाए या उसको मार दे, तो हम दूसरे इंसेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर पैरासिटॉइड्स, या फिर एक स्पेशल टाइप की फंजाई आती है जिसको हम कहते हैं एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को मार देती है। तो इसका हम मतलब बेसिकली हम वाइट फ्लाइज से डील करने के लिए नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड जो है वो इनके ऊपर कारगर नहीं है, ठीक है। सो लेट अस सी द टॉपिक इन इंग्लिश नाउ. So white flies are creating rampage in our agriculture sector because of their polyphagous nature. What do you mean by polyphagous? It means that these white flies are not very choosy about the food items they would they would target or they would eat. They target all kinds of foods, and they are prolific breeders. They breed very fast, and they breed at such a high rate that they are targeting our entire agricultural crops. Okay, so what are white flies? Basically these are insects, or these are hemipterans. What are hemipterans? Hemipterans are a type of insects which are feeding on the undersides of plant leaves. So they are found in warm and tropical climate, and they have already destroyed more than 2000 plant species, and they are also carrying as many as 200 types of plant viruses which are giving plant diseases and destroying our crops. So what is the threat from these white flies? The threat mainly is to cotton. Cotton is amongst the worst crops which are hit by white flies, and BT cotton, the genetically modified cotton, is also not resistant to against these white flies. So it's a strange fact which you have to remember if there is if the topic of white flies comes in your exam, and they give you a statement that BT cotton is resistant to against white flies, then it will be a wrong statement. You will have to mark it wrong, because BT cotton is not resistant against white flies. So we are also unable to control these white flies using synthetic insecticides. We are using rather naturally occurring insect predators. What are insect predators? See, one insect consuming another insect. So we are using some insects which can consume these white flies, or which can kill these white flies. We are also using a certain type of fungi which can kill insects. So we are using natural techniques to combat this white flies threat, because it is very difficult to control these white flies using synthetic insecticides. Okay, so let us move on to the next topic, which is personal guarantors इन कॉर्पोरेट डेट. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नवंबर 2019 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि क्रेडिटर्स जो हैं, जो कि खासकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स होते हैं, वो जो पर्सनल गारंटर्स होते हैं, अब समझ लो एक कंपनी है, उस कंपनी को जो है जो उस कंपनी के जो मतलब
एक तरह से जो जो प्रोमोटर्स हैं या उसके कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या कैपिटल जिन्होंने लगाई है, जो कंपनी चला रहे हैं बेसिकली, उनके बिहाफ पे जो लोग जब जब वो लोग लोन मांगते थे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनके बिहाफ पे जब जिन लोगों ने पर्सनल गारंटी दी थी कि हाँ इनको आप बैंक्स को कहा था कि आप इनको लोन दे दो बिकॉज वी आर गिविंग पर्सनल गारंटी, हम अपनी पर्सनल गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों को भी कहा है गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन ने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो हैं वो उन लोगों को भी सू कर सकते हैं आईबीसी के अंदर और उनसे पैसे की रिकवरी कर सकते हैं जिन्होंने उस टाइम पर पर्सनल गारंटी दी थी कि यस आप इनको लोन दे दो हमारी पर्सनल गारंटी पर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन को जो है वो अपहोल्ड किया है, कहा है कि ये जायज़ है कि गवर्नमेंट अगर कह रही है कि पर्सनल गारंटी जिन्होंने दी थी लोन लेते टाइम उनसे पैसा वसूल करना सही है, तो वो बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है और गवर्नमेंट की उस नोटिफिकेशन को सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि जो ये पर्सनल गारंटर्स होते हैं और जो कॉरपोरेट डेटर्स हैं, इन दोनों के बीच में जो है वो एक कनेक्शन है, ठीक है। अब कॉरपोरेट डेटर्स कौन होते हैं? जो लोग लोन ले रहे हैं, ठीक है। जो मैं अगर मेरी समझ लो एक कंपनी है और मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ, मेरे दोस्त ने मेरी गारंटी दी है कि बैंक को कि ये कॉर्पोरेट जो डेटर है जो आपसे लोन मांग रहा है, अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, मैं पर्सनल गारंटी ले रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स जो है पर्सनल गारंटी जिसने दी है उसकी जिम्मेदारी जो है वो एस्टैब्लिश होनी चाहिए। उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंट्रिंसिक कनेक्शन है और जो पर्सनल गारंटी जिन्होंने दी है उनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सनल गारंटी जो है वो पर्सनल गारंटर्स के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरह से जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है उसको जायज़ ठहराया है। तो सेक्शन 60 सब सेक्शन 2 जो आईबीसी का है उसके तहत जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जो है ये कार्रवाई हो सकती है, एडजुडिकेटरी प्रोसेस जो है वो इसके अंदर चल सकता है। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया देखते हैं। ये इन आईबीसी जो 2016 में पास हुआ था, ये कंपनीज और इंडिविजुअल्स दोनों के ऊपर लागू होता है, ठीक है। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि 180 दिन की प्रक्रिया के अंदर सारी इंसॉल्वेंसी, जिसको हम दिवालापन कहते हैं, पूरी जो आपकी प्रक्रिया है उसको पूरा कर देना 180 दिन के अंदर, इसका जो है वो लक्ष्य है, ठीक है। फिर अब इसके अंदर जो है डेटर्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये कोड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ऑफ कोर्स जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक जो है इम्यूनिटी देता है उन डेटर्स को कि वो क्रेडिटर्स से जो है वो रेजोल्यूशन क्लेम्स जो है जो क्रेडिटर्स उनके ऊपर रेजोल्यूशन क्लेम लगा रहे हैं वो उस पीरियड के बीच में नहीं लगा सकते जब तक ये कार्रवाई चल रही है, ठीक है। अब एनसीएलटी जो है वो डील करता है कंपनीज के मैटर में, ठीक है। अगर कंपनी कोई दिवालिया हो रही है तो वो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो एनसीएलटी में चलेगा, और अगर इंडिविजुअल या कोई पार्टनरशिप फर्म जो है वो दिवालिया हो रही है तो उसकी पूरी प्रोसीजर जो है वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में चलता है, ठीक है। फिर अब इस पूरे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को चलाने के लिए जो कि एक एपेक्स बॉडी है वो बनाई गई है, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके अंदर 10 मेंबर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से, लॉ में से और आरबीआई में से। ये जो 10 मेंबर्स हैं ये मिलके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को चलाते हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस आ सके आईबीसी को चलाने में, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट करने में, उसके सेटअप करने में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ये सारी चीज़ों का जो काम ये 10 मेंबर्स करते हैं, ठीक है। So now let us see this topic in English. The Supreme Court has upheld the November 2019 government notification which was allowing the lenders to initiate insolvency proceedings against personal guarantors. So let us imagine that I am running a company. Okay, so I went to the bank and I asked for a loan. The bank or the financial institution will not give me loan just on the basis of my application. So it will ask me to bring a personal guarantor who will indemnify or who will repay the loan on my behalf if I fail to return back or repay my loan. Okay, so the person, the friend or someone who gave personal guarantee on my behalf to the bank or financial institution, he is also liable because I have not paid the loan back. So now the bank can of course sue that personal guarantor. That's what the government did
in November 2019, it said that these financial institutions and banks can move against the personal guarantors who are basically big business houses, and they provided personal guarantee on behalf of some corporate debtors. Okay, so the court has already observed that there is an intrinsic connection between these personal guarantors and their corporate debtors. So of course there is a relationship between me and my friend who is acting as a personal guarantor on my behalf in the in helping me to obtain a loan from the bank. Okay, so he is also liable. So the court has observed that these corporate debtors and their personal guarantors should be dealt with a common forum in NCLTs. Okay, so in NCLTs, under the section 60 and subsection 2 of the code, these personal guarantors will also be liable for the guarantees that they have made in support of their corporate debtors, or their basically the friends, or some so basically what happens is some big business houses become personal guarantors for their friends or for their relatives, and they provide personal guarantee on behalf of their friends to the banks that you should please give them loans. We are signing personal guarantees on behalf of these companies. So they are now also responsible for the loans that they have or the money that their corporate debtors have borrowed. Okay, so now let us see what is Insolvency and Bankruptcy Code of India. This IBC was enacted in 2016 and it applies to both companies and individuals. So the objective of this IBC is to resolve the insolvency proceedings within this 180-day period. It also provides immunity to debtors from resolution claims that can be filed by creditors during this period. So for this 6-month period, the creditors cannot file resolution claims against the debtors in case of an insolvency. In case of companies, NCLT is dealing with the dispute, insolvency disputes, and in case of individuals and partnerships, debt recovery tribunal is dealing with these disputes. Okay, so for smooth functioning and transparent governance of Insolvency and Bankruptcy Code, the government also created an apex body, namely Insolvency and Bankruptcy Board of India. It has 10 members from Ministry of Law, Ministry of Finance and RBI, which and these 10 members are helping the IBC to run smoothly in the country. Okay, so now let us move on to the next topic, which is surplus of the RBI. सो आरबीआई जो है उसने ऑलमोस्ट 99,000 करोड़ का सरप्लस जो है वो 9 मंथ पीरियड का जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है. अब ये 9 मंथ का क्यों ट्रांसफ़र किया है? बिकॉज इस साल से गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो अप्रैल टू जो मार्च का हमारा कैलेंडर ईयर होता है, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर होता है, उसकी तरफ मूव कर रहा है. अदरवाइज़ वो वैसे जुलाई टू जून चलता होता था. इस साल से वो जो है वो जुलाई से की बजाय अप्रैल से चलना शुरू होगा. तो जो पिछले साल का है वो सिर्फ 9 मंथ का पीरियड बन रहा है. तो जो 9 मंथ का सरप्लस है वो गवर्नमेंट को उसने ट्रांसफ़र किया है. अब आरबीआई प्रॉफिट बनाता कैसे है? आरबीआई ऑफ कोर्स एक सेंट्रल बैंक है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट्स की बोरोइंग को मैनेज करता है. फिर वो बैंक्स को भी रेगुलेट करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, करेंसी और पेमेंट सिस्टम्स को भी मैनेज करता है. अब कुछ ऐसे फंक्शंस करते हुए उसको प्रॉफिट होता है, जैसे कि जब वो इंडिया के जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं वो भी उसी के पास होते हैं, है ना. अब वो फॉरेन करेंसी एसेट्स कैसे होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या डिपॉजिट्स जो हमने सेंट्रल बैंक्स में किया हुआ है, जैसे जो फॉरेन बैंक्स में जो डिपॉजिट्स है उसमें उसके शेप में हमारे पास जो है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं. तो उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई को, वो बेसिकली प्रॉफिट होता है आरबीआई का. अब उसको जो है, अब आपको पता है एक बैंक जो है, हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो खासकर आरबीआई से बोरो कर सकते हैं. तो जिस इंटरेस्ट पे वो बोरो कर रहे हैं, जिसको हम रेपो रेट या रेपो रेट कहते हैं जिसको बेसिकली, तो वो भी गवर्नमेंट उसकी आरबीआई की कमाई होती है. तो ऐसे टोटल जो कमाई होती है, जो चाहे वो फॉरेन करेंसी के में हो या फिर रुपी डिनोमिनेटेड जो लोकल रुपी में हो, वो सारी जो है टोटल गवर्नमेंट आरबीआई की प्रॉफिट होता है. अब क्योंकि आरबीआई को
कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स आरबीआई शुरू में तो प्राइवेट एक शेयर होल्डर बैंक के रूप में बनाया गया था 1935 में, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज करके ओनरशिप उसकी जो है वो 1949 में अपने पास रख ली थी। तब से जो है वो गवर्नमेंट का वो है, जो है वो आरबीआई एक तरह से गवर्नमेंट का एक नेशनलाइज बैंक है। और आरबीआई क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है तो जो भी उसको प्रॉफिट होता है उसमें से उसको अपनी जो है खर्चे काट कर, अपने कंटिजेंसी फंड, ये सारी चीज़ें जो अपना जो है वो फंड्स का काट के, अपने जितने रिजर्व्स काट के जो उसको सरप्लस बचता है उसमें से एक तरह से डिविडेंड के रूप में जो है अपने ओनर को वापस देना पड़ता है। जैसा कि किसी भी बिजनेस में होगा, अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, अगर मैं 100% उसका ओनर हूँ तो जितना भी प्रॉफिट उसका होगा वो सारा मेरा होगा। सिमिलरली वैसा ही है, अभी गवर्नमेंट जो है वो उस जितना भी आरबीआई प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको आरबीआई को जो है गवर्नमेंट और आरबीआई आपस में डिस्कस करके उस प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सेक्शन 47 जो है आरबीआई एक्ट का, वो ये गाइड करता है कि कैस कितना सरप्लस जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसके बारे में आपने देखा है कि बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत भ्रम फैलाया जाता है रादर, कि गवर्नमेंट ने देखो इतना सारा पैसा आरबीआई का ले लिया, आरबीआई हमारा पैसा लेके चली गई गवर्नमेंट। बट ऑफ कोर्स ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, हर साल किया जाता है, तो आप इस बहकावे में मत आओ। गवर्नमेंट ने कोई कब्जा नहीं किया आरबीआई के पैसे पे, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, हर साल इसको जुलाई में किया जाता था। लेकिन अब इस साल जो है अप्रैल में, क्योंकि अब ये अप्रैल के हम मंथ में जो है कैलेंडर जो है फाइनेंशियल ईयर की तरफ जा रहा है आरबीआई, तो इस बार जो है वो इस अप्रैल मई के पीरियड में इसको किया गया है। ठीक है, अब क्या ये सिर्फ इंडिया में किया जाता है? नहीं, यूके, यूएस, जितनी भी कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक है, क्योंकि यूके और यूएस की गवर्नमेंट्स उनको ओन कर रही हैं, तो वो भी जो है हमारी तरह आपस में डिस्कस करके कि कितना सरप्लस ट्रांसफ़र किया जाएगा गवर्नमेंट को, वो भी ऐसे ही डिसाइड करती हैं। सिर्फ जापान एक ऐसा केस है जिसमें गवर्नमेंट जितना बोल देती है उतना ही सारा जो है वो सरप्लस जो है वो उनके सेंट्रल बैंक को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो let us see this topic in English now. Now the RBI has transferred a surplus of almost 99,000 crores for the 9-month period from July 2020 to March 2021. So why this 9-month period? Because the RBI is shifting to the financial year of April to March. Otherwise, it was using July to June rather earlier, but last year it decided that it will also synchronize its financial year with the government and the private sector. Okay, so how does RBI make profit? Now RBI is a full service central bank. It manages the borrowings of government of India and state government. It supervises the banks and non-banking financial companies, and it manages the currency and payment system of the country. Okay, while carrying out all these functions, it makes some profit, right? So how does it make profit? It also holds some government securities, foreign government securities. It also holds the country's foreign currency assets and the deposits which the country has made with the central banks of other countries. So all the interest that it receives in the form of foreign currency is also its profit. Okay, so the interests that are received by the government or the country is transferred to the RBI. Okay, it also earns money while lending to the banks for very short tenures, such as overnight. You already know that RBI lends money to the banks in the form of repo rate. Okay, so whatever the repo rate, that is the profit of RBI. So RBI is earning profit in foreign currency assets plus local rupee also. Okay, so this combined is almost the profit of RBI. So why RBI is transferring this surplus to government? Basic simple answer is because RBI is fully owned by the government of India. So as the owner of a company, the government of India is being paid the surplus or the profits which is made by this company called RBI. Earlier, initially, basically, RBI was promoted as a private shareholders bank in 1935, but the government nationalized it in the year 1949, and since then the government of India is the owner of this RBI. So like any other company which is making profits and it has one owner, the surplus is transferred to that owner itself. Okay, so after making all the
reserves and all the contingency fund, and after all deducting all expenditures and depreciation and everything, every expenditure that is mentioned in section 47 of the RBI Act, whatever is left of the RBI, that surplus amount, it is transferred to the government of India. Okay, so it is not just the Indian government which uses this tool to of using the surplus of RBI or of their central bank. It is also practiced in the UK and the US, which also follows the same route that India is following. That is, government negotiates or consults their central bank, and regarding how much surplus will be transferred to the government, except in Japan, the government just tells their own central bank that this much amount has to be transferred this year to our accounts. Okay, so it is not unique to India. It is done in UK and US also. So any controversy regarding how much government has taken money from RBI, why government is taking money from RBI, all this is nonsense, plain stupid, because it is a routine procedure. It is generally done in July or August, but because this year the RBI is shifting to the April and March financial year, that's why this episode of surplus transfer is happening in this month of April and May. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.